अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के बाद आई वॉज एबल टू वर्क विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन एज अ बिजनेस क्लास कैबिन क्रू, ट्रैवल द वर्ल्ड। एंड इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो आपको आना ही चाहिए बिकॉज इट ओपन्स डोर्स टू सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अगर आप इंग्लिश में बात करते समय नर्वस हो जाते हो या आपको डर लगता है एंड इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना आपका ड्रीम है, आज की वीडियो मैंने आपके स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए ही बनाई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय गाइस, आई एम आरुषि एंड आई बिकेम एन एयर होस्टेस एट द एज ऑफ 18 एंड आज की वीडियो में मैंने आपके लिए 50 एवरीडे यूज सेंटेंसेस, फ्रेजेस लिखे हैं जिन्हें आप रोज़ डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ 5 सेंटेंसेस अ डे एंड डू इट फॉर द नेक्स्ट 10 days। एंड सबसे ज़रूरी बात बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रैक्टिस, with each sentence use the RSF technique. So R stands for reading, S stands for speaking and F stands for fluently speaking again. एक example के साथ समझ लेते हैं। The garden was fragrant with blooming flowers. So step 1, आप ये sentence तब बोलोगे when you are reading it on your screen. Step 2, now you will speak this sentence without reading it. So the garden was fragrant with blooming flowers. Step 3, you will now speak it fluently as if you mean it. So now we will say the garden was fragrant with blooming flowers. इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करना because I want कि आप जब ये sentences बोलो they should flow smoothly and it should look like कि आप वही बोल रहे हो जो आप सोच रहे हो। So now let's begin with our sentences. I'd like to make a reservation. So anytime you're booking a table or a room, instead of saying मुझे एक booking करवानी है या मेरे लिए एक table book कर दो, you can say I'd like to make a reservation. Next, I'm trying to eat healthier. We say this when we are trying to diet or work out and someone offers us a cheat meal. We say no thanks, I'm trying to eat healthier. Third, I am all about that. ये हम तब बोलते हैं अगर हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल, आई एम ऑल अबाउट क्रिकेट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, अगर हमें किसी चीज़ का प्राइस जानना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट प्राइस या फिर कितने का है, वी से हाउ मच डज दिस कॉस्ट। नेक्स्ट, आई एम नॉट बाइंग दैट। वी से दिस व्हेन वी डोंट बिलीव व्हाट समबडी इज सेइंग और वी हैव अ डाउट। सो एन एग्जाम्पल कुड बी, you are late because you got stuck in traffic. I'm not buying that. Next, I'll be home around 6. It's a way of letting someone know कि आप कितने बजे तक घर आओगे. So instead of saying मैं इतने बजे आऊँगी, we say I'll be home around 6. Let's grab some coffee tomorrow. Ask your friends and colleagues rather than saying कल यहाँ चलते हैं. You can say let's grab some coffee tomorrow. I can't believe he did that. I am disappointed. ये हम तब बोलते हैं अगर हमें बुरा लगे क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा काम किया या फिर कुछ कहा। We say I can't believe he did that. I am disappointed. I am open to that. This means that you are interested in or you are okay with doing something or trying something. So an example could be, I am open to new ideas or I am open to trying this new restaurant. Can you help me with this? This is a slightly formal way of asking for help. Rather than saying मेरी please इसमें help कर दो, you can say can you please help me with this? Next, you purposely did it, didn't you? This means कि आप कह रहे हो कि तुमने ये जानबूझकर किया. So next time when your sibling finishes off your food, you can say you purposely did it, didn't you? What's the weather like? So anytime जब भी आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो who lives in a different city or a country, you can ask them what's the weather like. Do you accept cards? Anytime while making a payment, instead of saying card चलेगा, we say do you accept cards? Where do you see yourself in the next 5 years? This is my ambitious question to you. Comment करके ज़रूर बताना and you can ask your friends also where do they see themselves in the next 5 years. I appreciate you doing this for me. Next time when someone does something nice for you, instead of saying just thank you, we can say thanks, I appreciate you doing this for me. I'm running late, sorry. Next time when you are stuck in traffic, instead of saying मुझे late हो जाएगा, traffic बहुत ज़्यादा है, we can say I'm running late, sorry. That's a valid point. You can say this अगर आपको किसी और का point of view सही लगे, interesting लगे, we say that's a valid point. Can you fill me in? इसका मतलब है tell me also what happened, especially when you don't know something that everybody knows and you were not there. You say
Can you fill me in? I'm not sure what you mean. You can say this अगर आप clearly समझ नहीं पा रहे what someone is trying to say. So we say, I'm not sure what you mean. Can you explain? I have sent the email. You can take a look. A message that you can drop or even say verbally after you have sent the requested email. Instead of saying I've sent it or भेज दिया, we say I've sent you the email. You can take a look. Got a minute? This is a way of asking someone if they are free for a small moment. So we say, got a minute? I just had to ask you this one question. Don't worry, you've got this. This is a way to encourage someone, like your friend has an interview and you tell them, don't worry, you've got this. It's been so long, I can't wait to see you. Friends and family जिन्हें आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो और आप उनसे बहुत जल्द मिलना चाहते हो. So we say, it's been so long, I can't wait to see you. Next, I'm going to make some tea. In India, we all love chai. So next time, whenever you are making tea, you say, I'm going to make some tea. Or can you make some tea for me? God forbid. जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि भगवान ना करे ऐसा हो. So in English we say, I'm carrying an umbrella. God forbid it rains. I'll think about it and let you know. This is a way of saying that you need some time to think about something and then you will respond. So instead of saying मैं सोचकर बताती हूँ, you can say I'll think about it and let you know. Which Netflix show is your favorite? A social gathering conversational question to start a potential talk. You can always ask people which Netflix show is your favorite and then the conversation starts. Text me when you reach home. घर पहुंचकर एक मैसेज ज़रूर कर देना. What did you do over the weekend? Ask your friends, colleagues on a Monday कि उनका weekend कैसा रहा. What did you do over the weekend? What's up with the plan? It means कि plan का क्या हुआ? Are we going or not? What's up with the plan? I wish I could decrease my screen time. Social media is addictive. This is a casual conversation in which you're talking about yourself. Instead of saying मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, you can say I wish I could decrease my screen time. Social media is addictive. I've got the most annoying sibling. Speaking of siblings, yes, they are annoying and this is how we describe them. I've got the most annoying siblings. Do you prefer working in a team or independently? You can ask this to your colleagues कि उनको काम करना कैसे पसंद है, वो कैसे comfortable हैं. You can say, do you prefer working in a team or independently? Can you recommend me some good books? Ask a person who loves to read and they will give you some amazing recommendations. Hi, I'm Arushi. Nice to meet you. Introduce yourself like this next time at a social event. Sorry, I keep forgetting. I'm a very forgetful person. Instead of saying मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, we can say sorry, I'm a forgetful person. I forget everything. I need to run a few errands later. मुझे बाद में कुछ काम करने जाना है इधर उधर. So instead of saying this, we say I need to run a few errands later. Do you work out? A way of asking someone if they go to the gym or they exercise. Instead of saying तुम gym जाते हो, we can say do you work out? What time is the meeting scheduled for? Instead of saying meeting कितने बजे शुरू है, you can say what time is the meeting scheduled for? I'll handle it. It means मैं संभाल लूँगी. So instead of saying मैं संभाल लूँगी, we say I'll handle it. Don't worry. Have a seat. Instead of saying बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो, please इधर बैठ जाओ, we say please have a seat. How could you say that? It means तुम ऐसा कैसे कह सकते हो. So instead of saying this, we say how could you say that? Be right back. Instead of saying मैं बस अभी आई, you can say be right back. Just a moment. हम हिंदी में कितना बोलते हैं ना, बस 2 सेकेंड, बस 2 मिनट. So instead of that, we can say just a moment, I'll be there. I'm starving. Let's quickly eat something first. Instead of saying मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं, we say I am starving. Let's eat something first. Free for a quick call. It's a way of asking someone that if they are free for a quick short call. So you say free for a quick call? I'm just asking. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, मैं सिर्फ पूछ ही रही हूँ. So in English we say don't get upset. I'm just asking. I'm all ears. It's a kind way of letting someone know that you are there for them and you will listen. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मैं हूँ ना, मुझे बता क्या हुआ. So in English we say I'm all ears. Tell me what happened. What's going on? It's a way of asking what's up. जैसे हम हिंदी में कहते हैं क्या चल रहा है. So what's going on? How are you? No problem. No worries. So this is a way of saying जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है, it's okay. So in English we say no problem, no worries, it's all good.
तो ये थे हमारे 50 सेंटेंसेस। आई नो इसमें से कई तो बहुत ही सिंपल थे, लेकिन आदत तो हमें हिंदी में ही बोलने की है। सो वाई डोंट वी स्टार्ट विथ स्मॉल चेंजेस एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, शैल वी? आप डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग स्लाइट चेंजेस कर सकते हो। टी कैन बी कॉफ़ी, 6 PM कैन बी 8 PM, ही कैन बी हर, बट सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर मत चेंज करना। सोचो आप ये अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हो। कॉन्वर्सेशंस में आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने बारे में भी बता सकते हो यूजिंग दीज लाइन्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। एंड मैं यही रेकमेंड करूँगी कि मिरर स्पीकिंग प्रैक्टिस के बाद ही यूज़ इट इन फ्रंट ऑफ पीपल। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बहुत स्मूथली बोल पाओगे, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है। एंड पीपल अराउंड यू शुड ऑल्सो गेट यूज टू यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। एक डर ये भी रहता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, अभी तक तो हिंदी में ही उन्होंने मुझे बोलते हुए सुना है, मजाक उड़ाएंगे। लेट देम। अगर आपको अपनी इंग्लिश सच में इम्प्रूव करनी है तो इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है और ना ही कुछ फ़नी है। सो बी अनअफेक्टेड। थोड़े टाइम बाद लोग भी यूज्ड टू हो जाएंगे आपको इंग्लिश में बात करते हुए। सो ये था आपका नेक्स्ट 10 डेज का स्पीकिंग प्रैक्टिस शेड्यूल। Follow the RSF technique with each sentence, improve with quality, speak it in the best way that you can. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अब अपनी प्रैक्टिस जल्द से शुरू कर दो and I will also keep guiding you in the process. Subscribe for more communication improvement and personality development content, and share this video with a friend who wants to improve their English language skills, and I will see you in my next one.